like vesicobullous disorders. So in vesicobullous disorders we have vesicular lesions, vesicles banenge, bulle banenge, that we have already discussed. I think you had lecture before on various types of lesions in dermatology. हो गया वो, papules, pustules, basic lecture अभी तक नहीं हुआ है आपका? Already must have, somebody must have taken before from our department. पैप्यूल्स होते हैं, उसके बाद बड़ा पैप्यूल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पस्चूल. बड़ा पैप्यूल पुस्चूल थोड़ी होता है. प्लाक. सो पैप्यूल एंड प्लाक, और उससे भी बड़ा हो जाता है तो नोड्यूल. छोटा सा वेसिकल होता है, वेसिकुलर लीजन इज अ फ्लूइड फिल्ड लीजन. इफ इट इज लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर वी कॉल इट एज वेसिकल. और बड़ा वेसिकल को क्या बोलते हैं? बड़ा वेसिकल मोर देन 0.5 सेंटीमीटर इट बिकम्स अ बुल्ले, बुल्लस लीजन, वेसिकोबुलस लीजन. तो ये सारे क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हैव बीन कवर्ड बिफोर. So I will not go into details again of the same basic lecture. Today we will be discussing about psoriasis. As this is the picture of psoriasis. So it's a scaly plaque. So it has classical features we will be discussing. So these are the various headings through which we will go in this lecture, starting with definition, then the etiopathogenesis. So all lectures will be covered under similar headings. One is definition, then what is the cause and how it occurs, that is what we call is etiopathogenesis. How it occurs, what is the pathogenesis of such lesions. Then comes the classification, then comes the investigation. Management part covers investigation, and finally treatment. So these are the headings of most of the diseases. So what is psoriasis? So it's a common, chronic, recurrent. So all these terms are very important. So it's a chronic disease, recurrent disease. That means it recurs regularly. Once you have psoriasis, mostly you'll have psoriasis throughout your life. So these are the clinical entities in dermatology which are chronic, but they are of much more concern because these are visible. If you have diabetes, nobody can make out that you have diabetes because this is a systemic disease. But if you have something chronic on the skin, then it becomes visible. So it is much more bothersome to the patient than diabetes. Although diabetes is have much more complications than psoriasis. So skin diseases somehow can be tolerated, but these are visible, so it's a concern for the patient. This is disfiguring, inflammatory and proliferative condition of the skin in which both genetic and environmental influences play a critical role. And this is characterized by red because of why the skin lesions are red mostly. विकन ये बंद कर दो दरवाजा ना, बाहर से आवाज आ रही है. यहाँ रटने का कुछ नहीं है. डोंट ट्राई टू क्रैम, नो नथिंग टू बी. लिखने का भी क्यों लिख रहे हैं आप लोग ये सब ना? व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स, व्हाट फॉर? ये किताबों में सब कुछ दे रखा है, कुछ नया तो नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे ना. आपके पास बुक्स होंगी डर्मेटोलॉजी की जो भी आप पढ़ते हो, या शॉर्ट नोट्स, वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस. कोई क्लिनिकल फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स विच आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जस्ट जॉटेड डाउन. अदरवाइज सारा का सारा ये लिखते रहोगे, उसको कोई फायदा नहीं. समझने की कोशिश करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है पूछो. रेड क्यों होता है लीजन? अपना कॉमन सेंस यूज करो. स्किन में रेडनेस क्यों आती है? हाँ, इन्फ्लेमेशन के कारण, वेस्कुलर वेसल्स के कारण, ठीक है ना. वेजो डायलिटेशन हो सकता है. सो रेडिश लीजन मीन्स वेसल्स आर इन्वॉल्व ऑल्सो. Vessels are usually in the dermis part. वहाँ पे vasodilation हो जाता है. So this makes the skin appears red. Otherwise जो हमारा constitutional color है, that we discussed last time, हमारा skin color is dependent on melanin. Then other so many factors were there. Most important is melanin. Other is carotenoids. Then dermal part, oxyhemoglobin, hemoglobin. So these are vascular part and the carotenoids and the pigment part. ये तीन मिला के हमें कलर देते हैं. If the vascular part increases, the lesion becomes red. तो वो reddish lesion होगा. इसमें इसका मतलब कि vascular etiology is also there, where the dilatation is there, especially in the papillary dermis.
Then scales are there, sharply demarcated, it is very well defined. Indurated plaque of various size, particularly over the extensor surface. This is important. Extensor surface and the scalp. Usually psoriasis it starts with the scalp. पेशेंट कंप्लेन करेगा कि स्कैल्प में मुझे डैंड्रफ हो रहा है और वहाँ बहुत सारी पपड़ी जम रही है. तो वन इज डैंड्रफ. डैंड्रफ इज डिफ्यूज, पूरे स्कैल्प में होता है डैंड्रफ ना, पर कुछ एक जगह पे अगर वो कहेगा मुझे पपड़ी जम रही है, दैट मीन्स इट मे बी सोरियासिस. It is not psoriasis 100%. There are so many differential diagnoses that we will not discuss in this lecture, especially for you undergraduates. Simple जो common diseases हैं, that only we are discussing. We will not go into details of differential diagnosis. So scaly plaque एक जगह पे कोई कह रहा है मुझे यहाँ 1 साल से है, that means it's psoriasis. और dandruff तो पूरे सिर में होता है, खुजली चलती है, scaling होती है. So usually psoriasis is very well defined. And extensors पे होता है. गिव हिस्ट्री थी, स्काल्प पे शुरू हुआ था और फिर उसको यहाँ पे एल्बोज पे हो गया, नीज पे हो गया, लोअर बटक पे हो गया. ये सब क्लासिकल साइट्स हैं जहाँ स्केलिंग प्रेजेंट होगी. दैट मीन्स चांसेस आर मच मोर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम psoriasis. Then etiopathogenesis includes genetic predisposition. So genetic is very important. Genetic factors are very important, especially HLA-B 13 and 17. Sorry. So these two predisposing factors are there. Genetic predisposition means अगर आपको है तो both the parents are having psoriasis, तो chances are much more कि बच्चों को भी psoriasis हो सकता है. It's not that penetrant, सबको नहीं होगा, but chances are there कि बच्चे भी suffer कर सकते हैं. Similar to vitiligo. Vitiligo आपको है तो some chances are there कि बच्चों को vitiligo होगा. Psoriasis is also a similar disease because of the genetic predisposition. There is epidermal hyperproliferation. So this is the basic deformity or the reason of formation of plaques in psoriasis. There is epidermal hyperproliferation. So skin divides faster than the normal skin. Normal skin, it takes how many days to divide and rejuvenate itself? It takes around 1 month. 1 महीने के करीबन लगता है कि हमारा स्किन बेसल लेयर से आते आते ऊपर आ जाती है और फिर वो शेड हो जाती है. इट टेक्स अराउंड 1 month to 45 days. पर हम लोग रोज क्लीन करते हैं, नहाते हो, आपको पता नहीं चलता है कि कब वो एक्सफोलिएट हो गया. कोई नहीं नहाता है तो स्केलिंग पता लगने लग जाती है. देन यू डिस्कवर कि स्केलिंग हो रही है. बट सोरियासिस में क्या होता है, द सेल टर्नओवर टाइम व्हाट वी कॉल इज ओनली 1 week. 1 हफ्ते में वो डिवाइड हो जाती है एंड देन इट कम्स अप. सो कुछ जगह पे आप देखोगे कि यू कैन सी सिल्वरी वाइट स्केलिंग इज देयर बिकॉज इट डिवाइड्स फास्टर एंड विद इन अ वीक इट पॉप्स अप. बाकी जगह पे 1 महीना लग रहा है, 1.5 महीना लग रहा है, उस जगह पे इट टेक्स ओनली 1 week 10 days. तो इसलिए वो दिखना शुरू हो जाता है. दिस इज द ओनली बेसिक problem that the people having psoriasis they face. Then antigen driven activation of autoreactive T cells, these are the responsible for this faster division of keratinocytes. Angiogenesis, vascular factors are involved, that is why the lesions are red. Multifactorial inheritance over expression of T helper 1 cytokines, such as all this is a long list which leads to inflammation, which leads to itching. And what are the trigger factors in cases of psoriasis? Sometimes patient of psoriasis is in remission for many months, many years, but suddenly the lesions they erupt over the body. So these are the triggers which leads to eruption of the various plaques. One is trauma. So any lesion which appears after trauma, what we call it, this phenomenon is called kibnerization. This is very important. Kibnerization in dermatology, if you scratch at a site, then the lesion will appear on that site, whatever you are suffering from. Suppose you have a wart on the face, if you scratch on the hand, the lesion, there may be a warty lesion appearance over the hand. This is called kibnerization. Similarly, in case of vitiligo, if you have trauma, a patient is having vitiligo and suddenly he falls and gets scratches over the knees, then there are chances that vitiligo will appear on the traumatic part, mainly over the knees and whatever frictional areas. This phenomenon is called kibnerization. Then mechanical, chemical, radiation trauma, whatever trauma. Infections, sometimes infections, especially streptococcal infection precipitates psoriasis. So there is a special form of psoriasis which we call as guttate psoriasis. So guttate means
Guttate, anybody knows the literal meaning of guttate? Guttate is like a raindrop. Raindrop lesions appears all over the body because of the streptococcal infection, throat infection. So this is the only psoriasis which is treatable because it occurs from streptococcal infection. If you treat the infection, this psoriasis lesion also they get healed and disappear and do not recur. Stress is another factor. So nowadays we see that stress is a etiological factor in most of the diseases. Any disease it can aggravate. Before it, stress was not given on the stress. Usually सबकी एटियोपैथोजेनेसिस में सारी चीज़ें थी except the stress. Psychiatric and psychological disorders used to have this etiology, but now most of the diseases from vitiligo to acne to psoriasis have one of the etiological factor as stress. Alcohol and smoking aggravate them. Metabolic disorders like pregnancy, in pregnancy if patient is having psoriasis, it will aggravate. And hypocalcemia also aggravates psoriasis. This is what we are talking about. A patient having psoriasis already having psoriasis. So if such a patient faces hypocalcemia, the lesions will appear. So this all are important because the treatment formulation is according to the etiopathogenesis and the triggers. So we ask the patient to stop alcohol, to stop smoking. In such patients we start calcium because usually we know that hypocalcemia is a trigger. So this is the cocktail that is used in the treatment part. So you have to formulate your treatment according to the etiopathogenesis. If you find something can be treated like streptococcal infection, go for antibiotics which treat sore throat, and finally you will be able to treat the lesions in psoriasis. For this you should know everything. What is the etiopathogenesis? Maybe this type of psoriasis which is a special form that will show, we will see the picture later on. So in such cases, otherwise in psoriasis there is no role of antibiotic. But if you have streptococcal infection and guttate psoriasis, then that is the only indication to start antibiotic and treat psoriasis. Then sunlight is usually beneficial in most of the cases. That's why we use phototherapy. But in certain cases it aggravates. Then drug is also a common trigger. So once you get a patient with psoriasis, then you should take a drug history, what all drugs the patient is taking. The most common drug that triggers psoriasis is beta blocker. So if you find that patient is taking beta blocker and these lesions occurred after taking beta blocker, then changing the antihypertensive may cure the patient. So these other things are so important than just the treatment of psoriasis. Then there is a long list of drugs. NSAIDs are most common incriminating agent in so many diseases and drug reactions also, and it is the commonest drug that is being prescribed, is being taken. हमें सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, फटाफट एनाल्जेसिक कोई भी ले लेते हैं. So it should not be, कईयों को कुछ शुरू भी होता है तभी ले लेते हैं कि हो नहीं उसको ना. So this is causing kidney diseases which is rampant nowadays because of the NSAIDs. Diclofenac इतना लोगों ने लिया है कि अब kidney problems are much more common. इतनी ज़्यादा किडनी डिजीजेज हो रही हैं, ट्रांसप्लांट्स आर गोइंग ऑन, पहले कहाँ होती थी इतनी सारी ना. सो ऑल दिस ड्रग्स आर responsible for so many skin diseases or other systemic diseases nowadays. And there is a list of other drugs which are not commonly used. So commonly what we use are NSAIDs. Then ACE inhibitors are also used. Lithium is used in, lithium कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे, बायोफुल, हाँ सेक्रेटरी में यूज़ करते हैं लिथियम. देन एंटी मलेरियल्स, टर्बिनाफिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैप्टोप्रिल, एंड विड्रॉल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर पार्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. डर्मेटोलॉजी में बोलते हैं कि सिर्फ स्टेरॉइड ही देते हैं, करना कुछ है नहीं, स्टेरॉइड देना है सिर्फ. ये डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ स्टेरॉइड देते हैं सबको. बट इसमें आपने स्टेरॉइड दे दिया तो पूरी बॉडी पे आ जाता है सोरियासिस. So withdrawal of corticosteroid, once you are giving corticosteroid, everything will be fine. Lesions will be under control. Once you withdraw corticosteroids, then lesions will come all over the body. What we call is erythroderma. Any skin diseases which occur on more than 90% of the body area is called erythroderma. कोई भी lesion हो. So erythroderma is much more common in psoriasis once you withdraw steroids. So steroid is not a
treatment part in psoriasis. There are certain types of psoriasis where we use steroids for a short period. Now patient profile. Adults is usually male and female are in similar number, but in adolescents, that is the younger age group, females are much more commonly having psoriasis than males. So there are two peak age groups where we see psoriasis. One is the adolescence period around 15 to 20, and other is the adult period or older age group from 55 to 60. So these are the two peak periods where we find most of the cases of psoriasis. Earlier age of onset in females and positive family history is another indicator of presence of psoriasis. Threefold higher risk in siblings of patients with onset before 15 years of age. So this is another indicator. If you have got psoriasis before the age of 15, then the chances of having similar lesions in siblings are threefold. Now history is very important. Patient gives history of prominent itching. So because all the cytokines are involved, it leads to itching in this patient. So patient will present with itchy erythematous scaly plaques. So these scaly plaques are as a typical scales. There are so many types of scales. What we find in psoriasis is silvery white scale. Silvery scaling is there. Increased skin scaling and peeling. New lesions appear at site of injury. This is Kibnerization. And then actual clearance of lesions following trauma to the skin. This is reverse Kibner phenomenon. Another phenomenon is reverse Kibnerization. So this usually you don't find in psoriasis, but there are certain other diseases where you after producing trauma, that lesion disappears. This is reverse Kibnerization. One of the example is granuloma annulare. So this is a lesion in dermatology where we just, if you take a biopsy to take the lesion for histopathology, next time when the patient comes for getting the report, the lesions disappear. वो तो कहते हैं हम आपने बायोप्सी ली थी उसके बाद ही अभी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट भी नहीं किया है एंड देन पेशेंट कम्स टू कलेक्ट रिपोर्ट द लीजन्स दे डिसअपियर. दिस इज रिवर्स किप्नराइजेशन. द ट्रॉमा लीड्स टू resolution of the disease. Exacerbation in winter, improvement in summer, and significant joint pain, stiffness, deformity in 10 to 20% of patients. So psoriasis can involve the nail. Psoriasis can involve the joints also. So these are the systemic manifestation of psoriasis. So patient may complain of joint pain also. So he may come only with the joint pain without any skin lesion. So you should, if the patient comes to you after you see these lesions, you can ask for any history of joint pain. So if it is also there, that correlates with the diagnosis of psoriasis. Sometimes the patient, they go to rheumatology or orthopedics and they are getting treatment from there without knowing the etiology of the joint pain. So usually the lesions sometimes they appear later on and starts with the joint pain, and finally the patient will end up in dermatology with psoriatic plaques. Morphology of the lesion. The classical lesion is erythematous. We already discussed, round to oval, scaly plaques with sharply demarcated border. It's a well demarcated lesion. Scaly, that means scales are silvery white scaling is there, or also we call micaceous scaling. And sides, the extensors are much more common. The elbows, knees, extensors, scalp, sacral area, palm soles are usually involved. Morphology, then there are two tests which are done to elicit or to diagnose psoriasis. One is Auspitz sign. Auspitz sign, when you scratch the lesion, there is pinpoint bleeding. So once we go into histopathology, you will know what is the cause of pinpoint bleeding. So we will not go into details of all this. This is because of the vasodilatation in the papillary dermis. Once you scratch or descale the lesion, the papillary dermis, you scrape the papillary region, there is pinpoint bleeding because of the capillaries in the papillary dermis. There is the grattage sign. It's like a, what we call is, it's a characteristic coherence of scale seen as if one scratches a wax candle. So when you scratch a wax candle, there is the wax heaped up at one part of the area. Similarly, in this lesion, if you scratch, all the scales they are heaped up at one part of the lesion. Kibner phenomena we already discussed. Warren-Hoff's ring is a hypopigmented appearance around the lesion. Now this is a classical psoriatic plaque. It is erythematous. One factor was erythema. It's reddish. Second is it's very well defined. You can see the border in this lesion. And third, it is, what is the third important finding in
silvery white scaling. So this is silvery white scaling. I don't know how much you can appreciate from the picture, but it seems to be. आप आगे आए, the first bench पे आओ. So silvery seems to be silver only, I think. थोड़ा लग रहा है ना silverish आपको. Scales are many types. जैसे आपने dandruff में scaling देखा होगा. So this is silvery white scaling, erythematous plaque, very well defined lesion. और फिर उस पर आप ये सारे जो आस्पिड साइन कर सकते हो, ग्रेटाज साइन कर सकते हो. लीजन्स कहाँ पे है उसको देख सकते हो. एक्सटेंसर्स में है, स्कैल्प से शुरू हुए थे, नी पे आया, एल्बो पे आया. This is psoriasis vulgaris. Vulgaris we last time discussed. Vulgaris is it's a common form of any skin lesion. So psoriasis vulgaris, this is the commonest form of psoriasis, which is generalized. You will find it over the extensors. You can find similar lesions over the elbows, lower back. These are the common sites. आपको लगे कि सिर का पेशेंट बोल रहा है इसके लिए प्लाक है, तो आप उसका डायरेक्टली देख सकते हो कि मुझे आपका एल्बो दिखाओ, मुझे नी दिखाओ, लोअर बैक दिखाओ, आपको वहाँ मिलेंगे ये सारे लीजन्स. So it's very easy to diagnose once you know the various types of psoriasis and the etiopathogenesis. Now morphological types, there are many morphological types of psoriasis. We will not go into details of this. आपको psoriasis vulgaris आता है या common presentation आता है, that is more than enough. Chronic plaque psoriasis, follicular psoriasis, linear psoriasis. As the name suggests, there are types of psoriasis. Follicular from the follicle, linear is just a linear lesion. Linear lesion can be produced by लीनियर सोरियासिस. और कहाँ पे हो सकता है? अभी तो हमने डिस्कस किया. लीनियर लीजन बनेगा कैसे? मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर इन प्लाक फॉर्म. लीनियर लीजन आर वेरी एटिपिकल. इन सोरियासिस लीनियर लीजन का कॉज क्या हो सकता है? ट्रॉमा, किडनराइजेशन. अभी तो हमने इतनी बार बात किया कि आपने वो पेशेंट खुजाल रहा है तो उस खुजली की जगह पे जो स्क्रैच किया है आपने सोरियासिस, वहाँ पे डेवलप हो जाएगा. दैट इज वन कॉज ऑफ लीनियर टाइप ऑफ सोरियासिस. अदरवाइज इट में प्रेजेंट ऑन इट्स ओन ऑल्सो. जरूरी नहीं है आपको इच करना है. बट इन द केस ऑफ सोरियासिस वल्गरिस में आपको लीनियर लीजन्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज कॉज्ड बाय स्क्रैचिंग और ट्रॉमा. एन्युलर लीजन्स, फिगरेट सोरियासिस, रूपियॉइड, एल्फेंटाइल, इसमें नहीं जाएंगे. दीज आर टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस ऑफ सोरियासिस. आपको कॉमन प्रेजेंटेशन पता है, दैट इज मोर देन इनफ. The gutted psoriasis we discussed. This is common in children. This is post sore throat, streptococcal infection, and good prognosis. This is the only psoriasis which has a good prognosis. In other types of psoriasis, once you have psoriasis, you will have psoriasis forever. वो रेमिशन में जाता है, किसी को 1 साल रेमिशन में रहता है, किसी को 5 साल रेमिशन में रहता है. बट ट्रीट हो गया हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट दिस टाइप ऑफ psoriasis can be treated. Then pustular psoriasis is complication of psoriasis where you will find pustular lesions. And erythrodermic psoriasis is psoriasis which covers more than 90% of the body surface area. Now this is gutted psoriasis. Pictures will just go through the various pictures, then you will be able to understand better and remember them. So this is a case of gutted psoriasis. You can see the lesions are as if the raindrops have raindrop appearance is there. Whenever they touch the surface, they produce such type of presentation. So usually you find gutted lesions over the trunk, especially the back. So this is little unusual over the legs, but these are very classical of gutted psoriasis. In such a type of presentation in children, go for an antibiotic and this will heal within a week, and usually the lesions will disappear within a month. This is another type of gutted psoriasis in adult. You can find similar lesions. This is not the one we were discussing before, that is psoriasis vulgaris. It is erythematous. Scaling is much less, but then the lesions are much more. This is annular psoriasis. Annular means, what is annular? Annular? Ring type. What is the difference between annular and nummular? ये सब आपके नहीं हुए क्या? फर्स्ट लेक्चर में कुछ नहीं हुआ क्या? सारे टाइप्स ऑफ लीजन्स, प्रेजेंटेशन, these are common definitions that everybody should know. बाकी चीज़ें आई नहीं आई, ये तो आना ही चाहिए. नाम से पता लगता है सब चीज़ें. एनुलर तो हो गया. एनुलर लीजन का कोई एग्जांपल किस में होता है? एनुलर लीजन रिंग वॉर्म्स में.
So tinea corporis cruris you will find annular lesions. This key there is central clearance and well defined border. Or nummular. Nummular is nummular dermatitis, nummular lesion. Nummular is coin shaped. Coin means it's not centrally, lesions are not clear. Whole of the plaque is there, but it is a nummular plaque where central clearance is not there. So these are annular lesions in cases of psoriasis. This is one type of psoriasis. Then comes the pustular psoriasis. That's very unusual form of psoriasis. It's a complication that occurs once you give, जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, इज टेकिंग स्टीरॉइड, तो सबको लगता है स्किन का कोई प्रॉब्लम है, स्टीरॉइड देना है. तो आरएमपी से या मेडिकल ऑफिसर्स से दे स्टार्ट स्टीरॉइड. डायग्नोज करना इज़ नॉट दैट इजी, क्योंकि कभी एमबीबीएस में पढ़ा ही नहीं था स्किन. स्किन का लगता ही एक तो कॉम्बिनेशन देना है हमको, क्लोबिटाजोल, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, वो चार चीज़ें मिलके मिलती है. क्वाडिडम आता है. देयर आर मेनी क्रीम्स अवेलेबल दैट मोस्ट ऑफ द जीपीज दे यूज़. उसको लगा देते हैं, 90% ऑफ द स्किन डिसऑर्डर दे क्लियर, बट देन दे रीअपियर विथ मच मोर लीजन्स ऑल ओवर द बॉडी. अदर स्टीरॉइड, स्टीरॉइड कॉकटेल, सब कुछ दे देते हैं, स्किन का आ गया स्टीरॉइड दे दो, और स्टीरॉइड विड्रॉ करते हैं. देन पेशेंट गोज इनटू erythroderma or pustular psoriasis. This is complication where pustules develop all over the body. So what is the difference between, is this an infection? यहाँ भी pustules हैं. pustules कहाँ पे बनते हैं? Where there is formation of pus. इन्फेक्शन में पस बनता है ना. बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें न्यूट्रोफिल सब मिलके दे फॉर्म पस सेल्स एंड अपीयरेंस इज पुस्टुलर. इन दिस केस दीज आर स्टीराइल पुस्टुल्स. इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा आपको. दीज आर स्टीराइल पुस्टुल्स which leads to formation of pustular psoriasis. This is another case with pustular psoriasis. The lesions are annular and nummular, whatever, but then these are studded with multiple pustules all around. Small pustules you can see, but इसमें pustular lesion देख के कोई एंटीबायोटिक ही शुरू करेगा. यूजुअली इफ़ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद सोरियासिस, हमें लगेगा कि इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबायोटिक दे दो इस पेशेंट को, एंड फाइनली नथिंग विल हैपन विद इन 1 वीक 10 days. वो बढ़ता ही जाएगा पूरी बॉडी पे. So this is not an infective condition where antibiotics should be used. This is a pustular psoriasis, and this is erythrodermic psoriasis. So in erythroderma, the lesion appears all over the body. So psoriasis vulgaris or other types of psoriasis finally leads to erythroderma if not properly treated in long run. So erythroderma में the lesions are not very clear. एरिथ्रोडर्मा में इस तरह का पेशेंट प्रेजेंट होगा तो विल नॉट बी एबल टू डायग्नोज दैट दिस इज अ केस ऑफ सोरियासिस टिल यू गेट प्रॉपर हिस्ट्री. आपके पास पुराने फोटोग्राफ्स हैं, कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि सारे लीजन, बॉडी हैज़ बिकम, होल ऑफ द बॉडी हैज़ बिकम रेड एंड माइल्ड स्केलिंग इज देयर. एरिथ्रोडर्मा, एज द टर्म डिनोट्स, एरिथ्रो इज रेड. सब मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस आर हिडन इन द टर्म्स इटसेल्फ. So reddish skin is erythroderma. If it is 90%, we call it erythroderma. Then there are various causes of erythroderma. Erythroderma सिर्फ psoriasis में नहीं होता है, हर स्किन डिजीज में erythroderma हो सकता है. ठीक है ना. स्केबीज भी अगर पूरी बॉडी पे फैल गई है तो then this is a case of scabies in erythroderma. Pemphigus vulgaris है, 90% बॉडी एरिया इन्वॉल्व हो गया है, तो पेशेंट इज इन erythroderma. कोई ड्रग रिएक्शन हुआ है, इट कवर्स मोर देन 90% ऑफ द बॉडी एरिया, देन द पेशेंट इज इन erythroderma. So cause is drug, other cause is psoriasis. So you have to find the cause once you get a patient with erythroderma. अब पूरी बॉडी पे आ गया है पर आपका उसकी हिस्ट्री लो. So many things have to be done to find out the cause. कॉज पता लगेगा तभी आप ट्रीटमेंट कर पाओगे इसमें. तो कॉज तो पता लगे कि erythroderma में पेशेंट गया क्यों. ठीक है ना. If it is from psoriasis, the treatment is different. If it is from scabies, the treatment is different. Now distributional variation. Scalp psoriasis, this is the commonest one. Most of the patients, around 90% of patients, they present initially with a scalp lesion. So if you find just a scaly plaque over the scalp,
It can be diagnosed as scalp psoriasis, and patient should be properly counseled that the lesions may appear all over the body also. With time, they appear on the extensors over the knees, they appear on the nails, and finally there may be joint involvement also. And nowadays, we uh, recently it has been seen that it has become a metabolic disorder. Psoriasis involves various parts, various systemic parts also. So we'll not go into details of all this. Then palmoplantar psoriasis, as the name suggests, it is over the palms and the soles. So sometimes only palms and soles are involved. Nail psoriasis, so various presentations are there over the nails, which are much more common in psoriatic patients. Nail pitting is common in psoriasis. So nail pitting, ये तो आप लोग ओपीडी में आओगे तब दिखाएंगे आपको नेल पिटिंग क्या होती है ना. So there are small pits in the nail. This is much more common in patients with psoriasis, alopecia areata. Onycholysis is, as the name suggests, onycho and lysis means क्या होगा? Infection. नेल को निकलने को ओनिकोलिसिस बोलते हैं. नेल बेड से अगर नेल ऊपर आ जाए तो दैट इज ओनिकोलिसिस. So there is subungual hyperkeratosis is there. Finally, they push the nail upward and finally it comes out from the bed. This is onycholysis. Subungual hyperkeratosis, as the name suggests, below the nail there is collection of debris. And the oil drop sign is seen in 25 to 50%. In the nail, you will see something that an oil drop is there below the nail. So this all lesions you will see when you come for posting in dermatology. Mucosal psoriasis can be there. Inverse psoriasis can be there. Inverse of anything is opposite to what we were discussing in a normal case. Normally we discuss that it present over the extensors, over the elbows, over the knees. Then in inverse, it becomes spares the typical extensor site and affects the intertriginous region. So you just remember the common presentation, that is more than enough. Then this is scalp psoriasis. On the scalp, scaly plaques are there. Then they may affect the retroauricular region also. So these are typical scaly plaques which are erythematous, well defined, and silvery white scaling is there. So all these three things are so important, and the presenting site is very important. Then this is case of palmoplantar psoriasis. You will find again similar lesions you can see on palms and soles in many diseases. But in this case, the lesion is very well defined, erythematous, and scaling is there. But scaling in this doesn't appear to be silvery white. That is the only difference because of the site, palms and soles, little yellowish it has become. But it is very well defined, and the base is erythematous. Here you can see palmar psoriasis, where erythema scaling is there, and a well-defined plaque you can see over the wrist region. This is nail psoriasis. So in this nail you can see the pitting. I think it's clear in this case. And the central one you will see the coarse pitting is there, irregular pitting, distal onycholysis, and ridging is there. This is erythematous plaque affecting the groins, but there is minimal scaling. What are the differential diagnosis in this case? आप ये देखोगे तो क्या डायग्नोस करोगे? जो आता है आपको, वैसे भी ज़्यादा पता तो है नहीं, 2-3 चीज़ें आती होंगी, उसमें से ही कुछ बोलो. ये तो रेजिडेंट से डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकता है. आपको पता ही 1-2 चीज़ें. सोरियासिस तो आज पढ़ रहे हो आप ना, नहीं तो सोरियासिस तो कभी नहीं बोलोगे. हमारा रेजिडेंट भी नहीं बोलेगा सोरियासिस, वो भी डायग्नोज नहीं कर पाएगा. सोरियासिस फ्लेक्चरल इज़ वेरी रेयर. वो तो सारे हम दूसरी चीज़ें निकालने के बाद ये बचता है. टीनिया वर्सिकुलर, ठीक है, वर्सिकुलर हो सकता है. बहुत सारी चीज़ें डर्मेटोलॉजी में नेगेट नहीं कर सकते अनलेस यू प्रूव्ड अदरवाइज. बट दिस इज़ नॉट द साइड. ग्रॉइंस में होता नहीं है वर्सिकुलर. दूसरी चीज़ें जो आप शायद एक ही चीज़ पता होगी, मुझे लग रहा है आपको टीनिया, वो भी नहीं बोल रहे हो आपने. ग्रॉइंस में टीनिया ही होता है, और क्या पता है आपको ग्रॉइंस में और क्या हो सकता है? दूसरा बताओ कुछ ग्रॉइंस में हो सकता है.
टीनिया तो बोलो इसमें ना, दिख रहा है रेड हो रहा है, आधे लोगों को हो चुका होगा कभी लाइफ में अभी तक। इचिंग होती है, रेडिश होता है, उसके बॉर्डर होता है। सो दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सोरियासिस। सो इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग दिस एज टीनिया, वो कभी ठीक होगा नहीं। दिस इज एरिथमेटस स्केली प्लाक ओवर द बियर्ड एरिया। तो फेस पे भी हो सकता है, चांसेस आर वेरी लेस। बच्चों में ज़्यादा होता है फेस पे। अगेन विल नॉट गो इनटू details of all this. That entity is called sebopsoriasis. So it's a combination of seborrheic dermatitis and psoriasis. Then psoriasis in children is bit different, little different. Plaques not as thick as in adults, less scaly. Diaper area in infants में भी हो सकता है. If diaper area is involved, usually it is confused with diaper dermatitis or the napkin rash. But then if it is not getting treated, we should consider for psoriasis. Face involvement much more common than adults. Usually face was not mentioned in adult cases. You don't find lesion over the face. This is very important. There are so many other diseases which are confused with psoriasis. If you find something on the face, less likely that it is psoriasis. Then so HIV will not discuss. Psoriatic arthritis. So it may affect the joints also. Then there are various types. Will not discuss. Psoriatic arthritis leads to so many other complications. So complicated psoriasis, as we already saw, generalized pustular psoriasis, that is a complication of either untreated psoriasis or withdrawal of corticosteroids. Then general erythrodermic psoriasis, so any untreated psoriasis may end up into erythrodermic psoriasis. So any type of psoriasis which affects more than 90% of body area is erythrodermic psoriasis. Then psoriatic arthritis. Histopathology will not discuss, but I'll just आपको कुछ पता नहीं लगेगा. Now coming to differential diagnosis. What are differential diagnosis of psoriasis? किससे हम confuse करते हैं psoriasis? Then this differential diagnosis is very important for the management purpose. आप उसको टीनिया करके चलोगे तो it will not heal. You have to diagnose, but then you have to differentiate it from various other lesions. One is nummular eczema. Eczema is also reddish, itchy, scaly. So you can confuse this psoriasis with nummular eczema. Nummular we already discussed. Then tinea corporis, body पे lesions है, scaly है, itchy है, red है. They are similar to psoriasis. अगर आपको पता है psoriasis का या versicular इसके tinea के differences, then only you will be able to make it out. And treatment is totally different. सब में steroid use नहीं होता है dermatology में. Lichen planus will not discuss. Secondary syphilis will not discuss. Pityriasis rosea. Have you heard of these terms? Whatever term you have heard of, then only we'll discuss that. Otherwise, no need to go into details of all this. आप psoriasis भी भूल जाओगे जो पढ़ाया है आपको ना. Drug eruption can be psoriasiform. Candidiasis is a candidal infection which may appear to be similar to psoriasis. ऐसा होता नहीं है, but this we have kept in as a differential diagnosis. Tinea angum, seborrheic dermatitis have to be differentiated from psoriasis. Mainly the scalp one. Scalp में जो dandruff सब करते रहते हैं, few of them are psoriasis. वो सबको लगता है कि scalp में itching एक ही वजह से होती है. और क्या वजह है scalp में itching के? सिर में खुजली और किस में हो सकती है? Common किस में? कुछ तो बताओ, कुछ तो आता होगा. सिर में खुजली नहीं हुई कभी? डैंड्रफ तो कॉमन वन, ठीक है ना. आप बोलते हो डैंड्रफ हो रहा है, थोड़ा सा फ्लेकिंग होता है, खुजली चल रही है. और सिर में खुजली कॉमन, हाँ, एक्टोपेरासाइट, दैट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म. सिर में खुजालते ही हम बोलते हैं कि कहीं जुए तो नहीं है आपको. पहला तो ये पूछते हैं, उसी का डर लगता है. फिर डैंड्रफ तो होता रहता है. सो सेबोरिक डर्मेटाइटिस हैव टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सोरियासिस. वेरी इंपॉर्टेंट. सबको लगता है डैंड्रफ है, खुद ही ट्रीटमेंट एंटी डैंड्रफ से करते रहते हैं. फाइनली यू लैंड अप टू डर्मेटोलॉजिस्ट. वो आपको बताता है कि आपको तो सोरियासिस है. दिस इज अ लीजन ऑफ टीनिया कॉर्पोरिस. ठीक है ना. इसमें कौन से किस टाइप का लीजन है इसमें? व्हाट इज दिस टाइप कॉल्ड? इसको कोई डिस्क्राइब करो. किस तरह डिस्क्राइब करोगे लीजन्स को? हाँ,
जोर से बोलो, कोई एग्जाम नहीं हो रहा आपका, गलत भी बोल सकते हो। मैक्यूलो पेपुलर का है। पेपुलर लीजन हो सकते हैं कुछ, बट देन इसका प्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट विल कॉल सच अ लीजन? न्यूमुलर है, एन्युलर है? न्यूमुलर है, एन्युलर है, एन्युल है, एन्युलर लीजन है ना आपका। उसका बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर इज रेड एंड सेंट्रल क्लियरेंस इज देयर। सेंट्रल देयर इज हाइपर पिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन व्हाट वी कॉल। सारा लीजन ही रेड होगा, प्लाक होगा, देन इट बिकम्स न्यूमुलर। इसमें एन्युलर लीजन है, पेप्यूल्स दे कोलाइज टू फॉर्म अ एन्युलर लीजन। एन्युलर कैसे बनेगा? छोटे छोटे पेप्यूल्स हैं जो कॉर्नर में है इसमें ना, देन दे फाइनली देयर इज सेंट्रल क्लियरेंस। जैसे जैसे ये रिंग बढ़ती जाती है, फंगस खाता जाता है स्किन के अंदर ना, इट स्प्रेड्स, सेंट्रल क्लियर होता जाता है, बाहर जाता जाता है। दिस इज द केस ऑफ टीनिया कॉर्पोरिस। दिस इज बोथ टीनिया कॉर्पोरिस एंड क्रूरिस। सब वर्ड से पता लगता है आपको ना, डर्मेटोलॉजी टर्म्स आर लिटिल डिफरेंट, जो आपको मेडिसिन पीडियाट्रिक्स आर इट्स टोटली डिफरेंट। इसमें टर्म्स थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, देन दिस इज ओनली सोनली वी यूज इन डर्मेटोलॉजी। क्रूरिस इज द रीजन। क्यों बोलते हैं टीनिया क्रूरिस? टीनिया तो टीनिया है, फंगल इन्फेक्शन है। देन द सेकेंड टर्म मेंशंस द groin area, so this is crural region, cruris. corporis, corporis is body, बॉडी के ऊपर है तो कॉर्पोरिस है, ग्रॉइन रीजन में तो क्रूरिस है। टीनिया मैनम इज, मैनम किसको बोलते हैं? टीनिया सबके आगे लगेगा, फिर बाद में आपको रीजन का पता लगेगा, तो वी यूजुअली डायग्नोस एंड कीप अकॉर्डिंग टू द रीजन। मैनम इज हैंड, टीनिया पीडिस फुट। इस तरह के सारे क्लासिफिकेशन उसका होता है, टीनिया मैनम पेडिस पीडिस। दिस इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हाइपरकेरेटोटिक palmar eczema, so it's eczematous lesion over the palms. The picture we saw before was palmoplantar psoriasis. What is the difference between this and the picture we saw lastly? That was erythematous, that was well defined, scaling in both was there. Here there is no erythema, not much of erythema, not very well defined, it's diffuse, and then symptomatically it may be itchy. Secondary syphilis will not discuss. Now coming to the treatment, one is general measures. आपका कब तक है लेक्चर ये? हाँ, हो गया? 5 बजे तक है? मुझे तो बोला है 5 बजे तक लेना है आपका लेक्चर। चलो 4 बजे तक ख़त्म करो उसको फिर ना। विल जस्ट डिस्कस ट्रीटमेंट एंड विल वाइंड अप। ट्रीटमेंट में काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेट रिडक्शन इन ओबीस पेशेंट्स। अब चुप हो जाओ तो जल्दी ख़त्म करेंगे उसको, 5 बजे तक चलेगा ये। जल्दी वाइंड अप करो ट्रीटमेंट को। जनरल मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इमोशनल स्ट्रेस शुड बी रिड्यूस्ड वट एवर द वे, सो मैनी मेथड्स आर देयर। अब तो आपके योगा मेडिटेशन सब कुछ है कोर्स में, है ना? आपने कराया योगा? पेपर में ही है, होगा अभी, सब होंगे योगा मेडिटेशन सब आएंगे अभी आपके। वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन ऑल द डिजीजेज। Avoidance of trauma, as we already saw, kibnerization, all the conditions where kibnerization causes propagation of lesion, avoidance of trauma is very important. Emollients, corticosteroids again, so potent steroids can be used locally, topically, not systematically. Steroid तो use करेंगे हम इसमें भी, but then systemic will not give. Keratolytic, what are keratolytics? Keratolytics क्या होता है? स्किन को निकालने का, ठीक है। तो ऊपर से जो भी डी स्केलिंग कैन बी डन बाय केरेटोलिटिक्स। इतना सारा ऊपर स्केलिंग है, उसको रिमूव करना है पहले, तब जाके दवाई काम करेगी प्लाक के ऊपर। सो केरेटोलिटिक्स स्पेशली सैलिसिलिक एसिड एंड यूरिया कैन बी यूज्ड, others will not go into details. Then topical therapy, phototherapy is another important, as we saw that
most of the cases they improve with sunlight. So sunlight in many countries is not available as such. 6 महीने तक proper light नहीं आती है वहाँ. So they came up with the idea of phototherapy, जहाँ आप artificial light देते हो and then patient stands in that chamber, which leads to resolution of lesions. This is what we call phototherapy. It can be combined with Soralin, then we call it as a PUVA therapy. This is PUVA therapy where application of Soralin is done and exposed to the light. What we have with us is UVB phototherapy in our department. So usually we are not combining with Soralin, just we ask the patient to stand in this light, which usually has a UVB radiation and which leads to resolution of many lesions. Systemic agents may steroid as such is not used, but it has to be used in certain cases where complication is there, especially in erythrodermic and pustular psoriasis. Other drugs can be used are cyclosporin, methotrexate, acitretin can be used. We will not go into details of all this treatment. Biologic therapy is the recent advancements where biologics are used, which works on tumor necrosis factor alpha and interferon gamma. Now prognosis, what is the prognosis in cases of psoriasis? Course of plaque psoriasis is unpredictable. Once you have plaque psoriasis, usually you have plaque psoriasis for life. Characterized by remission and relapses, often intractable to treat. Relapses in most patient improves in warm weather. Poor prognostic factors are early onset. बचपन में अगर होगा psoriasis, it will last much more and next generation में भी जा सकता है. Family history, stress, HIV and infection. So thank you so much.